We have recently discussed what exactly logical and physical database backup and recovery is within the database. Now we will discuss that how we can manage the full backup. Full backup means logical backup. As we have discussed, there are two types of backups. One is called physical backup and the other one is called logical backup. तो लॉजिकल बैकअप में हम ये देखते हैं कि हम क्या कौन कौन से स्टेप्स ले सकते हैं लॉजिकली टू टेक द बैकअप. तो लॉजिकल बैकअप हाउ टू मैनेज लॉजिकल बैकअप ऑफ होल all of the entire application, outcome of the logical backup and periodic logical backup. Logical backup copies the data but not physical files. Basically, we will take the copy of the data logically with the help of, let's suppose, import and export. So we take out the data as export logical, means the logical objects like tables, sequences, procedures, functions of that particular schema or of that particular table space or something. So that's basically called the logical one. In the logical applications point of view, we can say entire applications. We have data repositories such as Oracle Hyperion Shared Service Registry, and similarly Oracle Space Cube and individual artifacts such as scripts and other means of data as well. Outcome of logical data means that it is normally converted into SQL queries, and those SQL queries are basically converted into binary files and stored into a dump files. And those dump files are basically called exported files. Those will be imported again in the higher version or the same version of the Oracle. Periodic means that we can manage the data weekly basis, at least weekly basis, or recommended in case that physical backup fails, then we can use the logical backup. And similarly, if logical backup fails to restore it, then we can try to manage the things from the physical. So as I said last time, that we should take the both physical and logical in any organization so that any kind of problem can come up during the restoring of the data from the logical or from the physical, then we can try to resolve the issues. So what exactly we normally manage? Logical backup, how to manage? This is one of the sample tasks that we have discussed last time as well. So we normally manage to export the data. We can normally, without using this path, which is basically called Oracle path, this is Oracle home portion. And in this portion, we can say that this is Oracle home. So in this Oracle home portion, we don't consider this one, but if you have multiple Oracle installed in the system, then it is difficult for the Oracle that which exactly export file is going to apply. Otherwise, any path can be managed and export will run successfully. We should give the user ID and password through which we can export the data and exactly what kind of data, where in which file is going to be saved. And we have three options through which we can manage either entire database, schema, or individual tables. So these are basically steps for particularly how to take the logical backup as an export. Now we are going to perform one sample example how to export the data or how to take the logical backup. अब हम इसमें एक छोटी सी एग्जांपल करते हैं कि हम किस तरीके से लॉजिकल बैकअप ले सकते हैं. हमारे पास कमांड प्रॉम्प्ट दिया हुआ है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम का है और इसके ऊपर हम टाइप करते हैं EXP कमांड और ये हमारा एक लॉजिकल एक्सपोर्ट होगा. अगर किसी वजह से एक्सपोर्ट कमांड ना रन करे तो आपको ओरेकल होम पाथ के अंदर जाके बिन डायरेक्टरी से इसको आप एक्सपोर्ट करें, क्योंकि समटाइम्स आपके कंप्यूटर के ऊपर एक से ज़्यादा ओरेकल इंस्टॉलेशन हो सकती हैं. तो आपके पास जो ORCL या आपकी अपनी जो डेटाबेस है जिसको आप एक्टिव समझते हैं उससे आप इसको एक्सिक्यूट करना चाहते हैं तो फिर पाथ आपको वही देना होगा. अभी हमारे इस सिस्टम के ऊपर एक ही ओरेकल इंस्टॉल है. अगर हम इसको EXP लिखते हैं तो ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाती है क्योंकि इसका डिफ़ॉल्ट पाथ एक ही है. अब हम एक सैम्पल यूज़र से इसको लॉगिन करते हैं और देखते हैं कि हम इसकी एक्सपोर्ट किस तरीके से ले सकते हैं. हमारे पास इंटर अरे फैच बफर की ऑप्शन आती है. इसको आप एज इट इज़ इंटर करें, हमारे लिए जगह ये काफ़ी है. वी कैन जस्ट एक्सेप्ट दिस वन. इसके बाद हमने एक डिफ़ॉल्ट एक
पाथ हमने रखा हुआ है जहाँ पे हम डिफरेंट किस्म के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ये छोटा सा फोल्डर है सी ड्राइव में टेस्ट के अंदर। आप भी इसको बना लें अपने फोल्डर के अंदर, अपनी सी ड्राइव के अंदर, और वहाँ पे इसको क्रिएट कर लें ताकि हम अपनी फाइल्स वहाँ पे रख सकें। जिस तरह हम इसको कर सकते हैं S1.DMP, अगर हम इसको करें तो DMP अच्छी चीज़ होती है कि ये ऑप्शन दे कि ये डंप फाइल है। और S1 मतलब ये है कि आप इसको एज ए मैनेज कर सकते हैं कि ये हमारे पास, इसको कैप्स में लिखते हैं S1 या स्मॉल कर दें, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप हम अपना जो डाटा है वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं इस फाइल के अंदर, जो कि हमारा लॉजिकल डाटा है। अब हम इसमें यूज़र फ़िलहाल हम कर रहे हैं, तो यूज़र पहले ही सिलेक्टेड है, आप इंटर प्रेस करें। उसके बाद एक्सपोर्ट ग्रांट, किसी किस्म के ग्रांट्स इसमें दिए हैं उनको भी एक्सपोर्ट करें। और एक्सपोर्ट जो है वो टेबल के अंदर जो डाटा है वो भी हम कर सकते हैं, वरना हम स्ट्रक्चर भी इसका ले सकते हैं। इसी तरीके से कंप्रेसिंग फॉर्म में इसको ले लें ताकि हमारे पास ऑप्शन जो है अवेलेबल हो। तो ये प्रोसीजर स्टेप मैनेज होता है कि हाउ टू एक्सपोर्ट द डाटा into a file which is called a logical export. So this is how we can done this one. Now let's see and see whether file is created or not. We should go into this folder test, and we will see that over there, and this file is created, and this particular file has a size of 3 MB, around 3.7 MB. And this is our task, how we can export our logical data into a file, and from which we can import it back into the Oracle.